Good evening and warm welcome of everyone. Today again we are going to discuss about what has happened in the Q4 results of the stocks that we cover. I'm going to say the universe that we cover. The most important part of this week was that it was like highly volatile market. And before I'm starting to the main webinar, I would like to just share my overall this particular experience and the scenario that we faced all in this particular week. So सबसे बड़ा लर्निंग मेरा यही है, और जो मैं हमेशा हमारे जितने भी क्लाइंट्स है या जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं उनसे एक ही बात शेयर करता हूँ कि इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज टेम्परामेंट। स्पेशली जब बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तब आपका टेम्परामेंट आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ मैच होना काफी जरूरी होता है। अगर आपके पास टेम्परामेंट अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे मार्केट्स में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। एट द सेम टाइम आपकी जो स्टडीज होती है वो काफी लाइक व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपके पास वो पूरा लिखा होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे, यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपके पास आपके माइंड में एकदम से ड्रिल्ड होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे कि ऑन द डे ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट्स वी सॉ करेक्शन इन द मार्केट, but towards the end the market recovered and managed to close above the levels of 21,700, on which we were discussing since last so many webinars। यानी कि कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 महीने तक मैंने यही बात की थी कि 21,700 जब तक मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मार्केट ठीक है, तब तक मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो मार्केट का अप है ही, मीडियम टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर 21,700 के नीचे अगर बंद होता तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट that day also the market recovered sharply from lows and it closed above the levels of 21,700। in fact, on that day when there was a decline in the market, it arrested at 200-day simple moving average, which is like something unique, and from there again we saw rally। और अगर आज देखेंगे तो मार्केट ने सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते हुए नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द प्रीवियस हाई। एट द सेम टाइम इफ वी जस्ट गो थ्रू विद द ओवरऑल फंडामेंटल रीजनिंग और मे बी स्टैटिस्टिक्स, एक बात काफी क्लियर थी कि मार्केट अगर FY26 के बेसिस पे आप देखते हो तो मार्केट जैसे ही करेक्ट कर रहा था वो काफी अट्रैक्टिव होते जा रहा था। एंड जैसे ही मार्केट ने पॉज लिया वी सॉ रैली इन IT एंड FMCG कंपनीज, जहां पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लास्ट 6 महीने में कोई बड़ा स्पेसिफिक बाइंग स्ट्रेंथ नहीं देखा था या कोई भी बड़ी बाइंग एक्टिविटी नहीं देखी थी। व्हाट इट मींस दैट कि इमीडिएटली मार्केट ने अपने टोन को चेंज किया, मार्केट ने वापस उन सेक्टर्स पे वापस इन्वेस्टमेंट या मे बी कॉन्फिडेंस दिखाया जहां पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव थे। तो इसका ओवरऑल जो एक फाइनल मैं कहूंगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत सारी है और वो लिक्विडिटी किसी ना किसी सेक्टर को, किसी ना किसी स्टॉक को चेस करेगी। जैसे ही मार्केट ने देखा कि मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इस मार्केट का और जो बेसिक्स के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही था कि मेजॉरिटी आनी चाहिए, और मेजॉरिटी तो आ गई थी। यानी कि उस दिन इतना क्लियर था कि एटलीस्ट 292 सीट्स तो मिल गए, दैट मींस मेजॉरिटी है। तो जो भी एक्सपर्ट्स थे दे हैव स्टार्टेड बाइंग दोज कंपनीज और दोज सेक्टर्स वेयर देयर इज अ वैल्यू। और इसीलिए आपने देखा होगा कि IT कंपनीज, FMCG कंपनीज, कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज या स्टॉक्स सेक्टर्स, वहां पे हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा एंड इवेंचुअली द मार्केट रिकवर। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी हैव टू सी कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के बाद कैसे चलता है। लेकिन व्हाइल लुकिंग एट द एंटायर पैटर्न आई एम ऑफ द व्यू दैट दिस मार्केट हैज फॉर्म्ड अ हायर बॉटम अगेन at 21,500 300 levels, whatever the level that it has formed on the day of election results, but it's a now new base for the market, and with that base we have to see this market।
अच्छा, ये जो वेबिनार है वो आज का वेबिनार हम लोगों ने Q4 के अर्निंग्स के बेसिस पे बनाया है, यानी कि एग्जैक्टली Q4 के अर्निंग्स में क्या हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव सीन इन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, कभी भी जब भी हम लोगों ने वेबिनार किया है, हमने एक ही बात कही है कि जो एक्सपेक्टेशंस था उस एक्सपेक्टेशंस से स्लाइटली मार्केट ने बेटर ही किया है। व्हाट इट मींस दैट द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फॉर दैट अमरजीत इज विद अस एंड ही विल guide you, he will explain that what has exactly happened and which are the sectors and stocks are looking good for the next quarter. So over to you, Amar. थैंक यू सर। सो ये फोर्थ क्वार्टर का जो रिव्यू है, अर्निंग रिव्यू है, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है जो स्ट्रेटजी पार्ट, जिसमें निफ्टी और हमारे कवरेज के स्टॉक को हम बताएंगे कि किस तरह से अर्निंग गई है, आई है, और किस तरह से आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ पे लैग किया है। और सेकंड पार्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, और उसके अंदर हमारे टॉपिक्स क्या है, हमारे एनालिस्ट सब एक्सप्लेन करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो फोर्थ क्वार्टर में जो अर्निंग रही, रिजल्ट जो रही है, ना ज्यादा डिसअपॉइंट किया और ना ज्यादा एक्साइटिंग थी। इफ यू सी द एबिटा लेवल पे ना, तो नेट प्रॉफिट, नेट 50 निफ्टी 50 इंडेक्स का जो एबिटा है 55.9% ग्रो किया है, विच इज बिलो आर एक्सपेक्टेशन। It was below our expectation, 1.5%. However, we see strong profit in healthy profit in the net Nifty 50 index, which grew 8.6% and which is above our estimates 4.3%. So mainly reason था जो भी अभी इस क्वार्टर में ग्रो हुआ है निफ्टी 50 का अर्निंग्स 8.6%. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट, जो हमने आउट परफॉर्म किया है, तो उसका स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स एंड अकाउंटिंग चेंज इन द कोल इंडिया, सो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी दिखी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा ड्रैग किया है जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन्होंने, तो इसलिए मॉडेस्ट ग्रोथ हुआ है निफ्टी के अर्निंग्स में 8.6%, बट विच इज अबव आवर एक्सपेक्टेशन। अगर हम अपने इन्वर्स की बात करें, टॉक अबाउट द केआई इन्वर्स, कोटक इन्वर्स, व्हाट वी कवर द स्टॉक, एंड अगर उसकी अर्निंग देखें तो विच इज 8.4% ग्रोथ है, ahead of our expectation. We were expecting 6.3%, and which is clearly 2% outperformance. And if exclude the marketing companies, oil marketing, OMCs companies, so growth दिखेगा आपको 26%. Overall, अगर if we will talk about the FY24, तो Nifty grew by 20%. But if we will adjust the Coal India and BPCL and HPCL, so अगर अर्निंग देखोगे तो 13% का ग्रोथ है अर्निंग में। इस ओवरऑल कवरेज में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट एंड बैंक एंड डाइवर्सिफाई बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर विनर, एंड मेटल एंड माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस आर लूजर। वहां पर डिक्लाइन किया है उन्होंने अर्निंग्स में फोर्थ क्वार्टर में। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी के फोर्थ क्वार्टर की, जो किस निफ्टी के स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया और कौन से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। So if I'll see outperformance वाला stock, so Axis Bank outperform किया। The reason was that कि उसका treasury income बहुत higher आया था। Coal India again outperformance because of the strong earning due to account change, and IndusInd Bank better than expected operating performance, which overall earning में impact किया positively. M&M beat the EBITDA level and lower tax rate, जिसके कारण earning अच्छा आया है यहाँ पे। SBI ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था, इसके लिए यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं। टेक महिंद्रा हायर अदर इनकम की वजह से ओवरऑल नंबर अच्छे हैं और आउट परफॉर्म किया है। और अल्ट्राटेक जहाँ पे लोअर कॉस्ट था उसके वजह से नंबर्स के अच्छे हैं। सो दीज आर द स्टॉक्स निफ्टी 50 में जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, एंड देयर आर सम लूजर जिसने अंडर परफॉर्म किया है। सो दीज आर द स्टॉक। अदानी पुट because weaker logistic growth and profitability, because of that below estimates are the numbers. Dr. Reddy's because if you see the muted growth across the market and higher R&D spends, इसके वजह से ओवरऑल अर्निंग में इम्पैक्ट पड़ा। आइशर मोटर लोअर देन एक्सपेक्टेड एवरेज रियलाइजेशन प्राइसेस एंड हायर देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, सो ओवरऑल अर्निंग में हिट किया। एचडीएफसी बैंक अगेन अंडर परफॉर्म किया है। हीरो मोटर कॉर्प higher employee cost and other expenses also hit the profitability, and Tata Motor
अगेन वीक डोमेस्टिक कमर्शियल सीवी बिजनेस परफॉर्मेंस, उसके वजह से अर्निंग इम्पैक्ट पड़ी है। नेक्स्ट स्लाइड। So we will talk about the outlook and valuation for the Nifty. So अगर अभी देखें तो बीजेपी ने एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए कोalition, जो कोalition हुआ था उसके थ्रू लोकसभा का 2024 का नेशनल इलेक्शन जीता है। उसमें 292 सीट सिक्योर किया आउट ऑफ 543 इन द लोकसभा। सो मार्केट को एक कंसर्न था इनिशियली कि ये इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी कि नहीं, उसकी वजह से मार्केट गिरा था उस दिन इलेक्शन के टाइम पे। बट अभी मार्केट को लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली ये लोग एनडीए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना सकते हैं, और इसके कारण जो इकोनॉमिक एजेंडा था वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो वी एक्सपेक्ट द न्यू गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद इट्स इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक एजेंडा, बट इट मे बी ए ट्विक इट्स प्रायोरिटी टू सपोर्ट द कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो एग्जैक्टली क्लियरिटी आएगी कहाँ पे इनका फोकस रहेगा, कैसे करेंगे, वो बजट में आएगा, अपकमिंग बजट में आएगा, तो वहां पे एक क्लियरिटी आएगी हमको। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी बिलीव दैट गवर्नमेंट में कंटिन्यू विद इट्स फोकस ऑन द अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां पे कंटिन्यू रहेगा विद द सेम गवर्नमेंट। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो अभी हमारा ईपीएस है, अर्निंग ईपीएस है, 2025 में 10% ग्रो करेगा और 2026 में 14% ग्रोथ करेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट निफ्टी इज करेंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 20.9x ऑन FY25 के अर्निंग पे और 18.326 के अर्निंग पे। सो अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट की, अगर हम देखें तो अभी भी स्टिल वैल्यूएशन इज हायर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। एंड सो हमारा रिकमेंडेशन और वी विल प्रिफर दैट कि जो कंपनी जो जिनकी अर्निंग बहुत स्ट्रांग है, जिसमें कॉन्फिडेंट है, कंटिन्यूसली सालों साल अर्निंग दे रही है, रेवेन्यू अच्छे आ रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, और जो उनका वैल्यू आरओई बहुत अच्छा है और वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो वहां पे हम देख सकते हैं पोजीशन बनाने के लिए। और जैसे जैसे ऐसे सेक्टर्स स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जहां पे भी थोड़ा डीप है अपॉर्चुनिटीज मिले तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड। So on the sector side, so first sector is metal and mining. So हमारा expectation था क्या, जो net profit for our metal and mining coverage stocks degrew by 25%, and our expectation was 15% degrowth, and which is below our expectation, बहुत ज़्यादा degrow हुआ है। And during the fourth quarter FY24, EBITDA margin was contracted 40 basis point to 15.5% in this coverage stock, and which is below our expectation. We were expecting 15.7%. So वहां पे 20 basis point का dip आया हमारे expectation से। और अगर इस सेक्टर में देखें तो हिंदाल्को इंडस्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्युमिनियम एंड टाटा स्टील, दीज आर स्टॉक विच इज रिपोर्टेड नंबर अबव आवर एस्टिमेट्स। एंड फ्यू स्टॉक्स जैसे एनएमडीसी हो गया, सेल हो गया, वेदांता हो गया, विच रिपोर्टेड बिलो एस्टिमेट्स नंबर। और इनलाइन में जो आए थे जिंदाल स्टील एंड पावर एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, ये इनलाइन विद एस्टिमेट थे नंबर्स के। So going ahead in the 20, if we will talk about the 2025, so अगर हम देखें तो we are expecting strong earning growth in this sector, mainly because of the higher global realization. जैसे realization बढ़ेगा तो overall pricing power बढ़ेगा, तो profitability में फर्क पड़ेगा। Apart from that, we are expecting higher steel volume numbers. तो वहाँ पे overall growth अच्छा आएगा metal and mining में next year FY25 में। And in this space we prefer Gravita India and Jindal Steel, हमारा topic है। For the next slide, Shashwat, next slide. So next sector है consumer staple। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस सेक्टर में अगर हम देखें तो अगर रेवेन्यू देखें तो कंपनी का ड्यूरिंग द क्वार्टर टॉप लाइन फ्रंट में ओवरऑल सेक्टर ने 4.8%, जो हमारे कवरेज में है 4.8% रिपोर्ट किया है रेवेन्यू ग्रोथ। और एबिटा देखें तो 8.5% का ग्रोथ था, विच इज बेटर देन रेवेन्यू ग्रोथ। एंड पैट 5% का ग्रोथ था। कंज्यूमर स्टेपल में ना ओवरऑल टॉप लाइन सब्ज्यूट था, बट एबिटा फ्रंट पे मार्जिन अच्छा था, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए एबिटा में कंपेयर टू टॉप लाइन एबिटा अच्छा ग्रो किया है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं यहाँ पे, और कुछ कंपनीज मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है रूरल डिमांड के ऊपर, कि आगे जाके जो मॉनसून बेटर रहेगा और रूरल डिमांड में अच्छा ग्रोथ आएगा और नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो
इसलिए अगर हम ये सब कंसिडर करें तो आगे आने समय में ना कंज्यूमर स्टेबल्स जो सेक्टर है रिलेटिवली उसका आउटलुक स्टेबल और बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फ्रंट पे बात करें तो वहाँ पे जो नंबर्स थे काफी वीकनेस देखा गया है क्यूएसआर एंड पेंट एंड फुटवेयर सेगमेंट में। और डिस्क्रिशनरी पैक्स सॉ मोर ईपीएस कट ड्यू टू द वीक एंड अनसर्टन ग्रोथ आउटलुक। यहाँ पे हमें इतना श्योरिटी नहीं लग रहा है स्पेंडिंग में डिस्क्रिशनरी, तो इसलिए अर्निंग कट की है। So in this space, we prefer Godrej, Pidilite, Varun Beverage, Titan, and United Spirit and Sapphire Foods. So over to Arun for the next slide. थैंक यू अमर। ऑटोज में आप अगर Q4 देखें तो वहां पर हमने देखा था कि टू व्हीलर सेगमेंट और फोर व्हीलर सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रही है। और सीवी में हमने वॉल्यूम डिक्लाइन देखी थी, इवन ट्रैक्टर्स में हमने वॉल्यूम डिक्लाइन देखी थी फोर्थ क्वार्टर में। जस्ट एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर, ऑटोज जनरली आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे एवरी ईयर ना, आप अगर लास्ट फ्यू ईयर्स 5, 10, 15 ईयर्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो ऑटोज में आप साइक्लिकलिटी देखेंगे वॉल्यूम्स में। सो आप कुछ साल देखेंगे जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री, फिर कुछ साल आप देखेंगे वॉल्यूम में डिक्लाइन आता है। सो एक ये एक साइक्लिकलिटी होती है ऑटो इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होती है डिमांड साइड पर। और इसमें स्पेसिफिकली साइक्लिकलिटी सीवीज में और ट्रैक्टर्स में थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। कमिंग बैक टू फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट में, अभी इसमें हमने जो दूसरी चीज देखी थी ये क्वार्टर में कि कंपनीज के जो ग्रॉस मार्जिन थे वहां पर हमने काफी मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट देखे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बिकॉज लास्ट ईयर कमोडिटी प्राइसेस हाई थे या रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई थे, तो उसके वजह से उनके ग्रॉस मार्जिन इंपैक्टेड थे। पर वो कमोडिटी प्राइसेस ये साल करेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर यानी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 के मुकाबले बेहतर थे इस बार। और आप ऑटो कंपनीज के ब्रॉडली रिजल्ट अगर आप देखें तो उसमें मार्जिन भी काफी स्टेबल रहे थे अगर हम थर्ड क्वार्टर टू फोर्थ क्वार्टर का कंपेयर करें तो। आगे चल के हमें वॉल्यूम ग्रोथ पे ऐसा लग रहा है कि FY25 स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमें लग रहा है कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट है, वहां पर हम वॉल्यूम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 में, बट that will be more mid single digit to slightly more than that, so 5, 7, 8% types की या something of that sort, 5 to 7% sort of volume growth ब्रॉड लेवल पर एक्सपेक्टेड है कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। जबकि टू व्हीलर इंडस्ट्री एक ऐसा है जहां पर हमें लग रहा है कि थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले थोड़ी बेहतर रहेगी इस बार। अगर आप कोविड का डाउनफॉल देखें जहां पर वॉल्यूम में बहुत डिक्लाइन, यार आप 2019 था जिसमें जो इंडस्ट्री ने टू व्हीलर इंडस्ट्री ने पीक वॉल्यूम्स किए थे, वहां से बाकी सब सेगमेंट्स के वॉल्यूम्स उन्होंने पीक अचीव कर लिए हैं, बट टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट रह गया था जिन्होंने अब तक अपने 2019 के जो पीक वॉल्यूम्स थे वो अचीव नहीं किए थे, सेल्स वॉल्यूम जो थे। तो हमें लगता है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा वहां पर बेहतर होगा अभी आगे चल के टू व्हीलर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक और चीज जो पॉजिटिव हो सकती है टू व्हीलर स्पेस और इवन ट्रैक्टर्स के लिए, ये वो है कि मॉनसून का प्रेडिक्शन है अबाउट नॉर्मल दिस टाइम। सो एक वो दैट्स अनदर पॉइंट आई थिंक जो ऑटो इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा, स्पेशली ट्रैक्टर्स में और टू व्हीलर साइड में जहां पर रूरल का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो हम ब्रॉडली एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे, ब्रॉडली लिटिल बिट कम ज्यादा थोड़े बहुत रहेंगे, बट बहुत ज्यादा मैसिव चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं गिवन की कमोडिटी प्राइसेस अभी जो लेवल पर है। इनमें हमें टाटा मोटर्स पसंद है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और उनो इंडिया, इन चारों पे हमारी एड रेटिंग है। नेक्स्ट स्लाइड। सीमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो सीमेंट के लिए ओवरऑल वॉल्यूम साइड पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा था। जो हमारी कवरेज कंपनीज हैं उनमें अराउंड 14% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है ये क्वार्टर में। तो इसका जो मेजर रीजन रही था कि इसमें डिमांड एनवायरनमेंट काफी अच्छा रहा था। इसके अलावा जो दूसरी चीज हमने देखी थी सीमेंट सेक्टर में देखी थी कि एनर्जी कॉस्ट काफी स्टेबल थे, मतलब वहां पर थोड़ा ईज आउट हुआ था, करेक्शंस हुए थे थोड़ा एनर्जी प्राइसेस में, जिसका कि कंपनीज को बेनिफिट हुआ था। इसके वजह से अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, आप फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 से फोर्थ क्वार्टर 23 को आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर they have seen a steep increase in profitability for most cement companies. So ये चीज we have been seeing for entire FY24 आप 23 से कंपेयर करोगे तो ये चीज हमने देखी है और वो फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुई है। Now going forward, we are assuming increase in profitability of cement companies में हम एक्सपेक्ट करें कि उनकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। उसका एक रीजन ये है कि पावर कॉस्ट और जो फ्यूल कॉस्ट है वो थोड़ा लो है और सीमेंट रियलाइजेशन भी स्टेबल है। बट अगेन एक सीमेंट रियलाइजेशन जो सीमेंट के प्राइसेस है उस पर हमें थोड़ी नजर रखनी होगी।
बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स या वॉल्यूम्स थोड़ा इंपैक्टेड हो सकता है बिकॉज इलेक्शंस थे। सेकंड क्वार्टर थोड़ा जनरली जुलाई टू सितंबर पीरियड सॉफ्ट होता है सीमेंट के लिए बिकॉज ऑफ मॉनसून्स। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है, अगर आप देखें तो सेकंड हाफ शुड बी बेटर देन फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 फॉर सीमेंट कंपनीज। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो ये थोड़ा हमारा कंसर्न पॉइंट रहा है सीमेंट पे, जहां पर वैल्यूएशंस काफी हाई हैं सीमेंट स्टॉक्स के। और और उसके वैल्यूएशन तो हाई है, साथ में देयर आर रिस्क की जो एस्टिमेट्स हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी की सीमेंट कंपनीज की, अगर वो मिस हो जाए तो वो एक थोड़ा स्टॉक प्राइस पे प्रेशर बना सकता है। बट करंटली ये लेवल पे हमारे डालमिया भारत और नोवोको विस्टास पे हमारी एड रेटिंग है सीमेंट स्पेस। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू आईटी साइड पे, अगर आईटी में देखें तो Q4 में हमने ये देखा था कि आईटी कंपनीज ने वीक क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया, और ये एक ट्रेंड हम रिसेंट टाइम से देख रहे हैं आईटी कंपनीज में। और इनफैक्ट आप काफी सारी कंपनीज देखे तो उनके रेवेन्यूज क्यू ऑन क्यू बेसिस थर्ड क्वार्टर पर आपने देखा होगा, तो वहां पर या तो फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ है या थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये चीज हम काफी टाइम से देख रहे हैं, और इसका एक मेजर रीजन ये रहा है बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में डिमांड काफी वीक रही है, और इसकी वजह से स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी का सर्विसेज कंपनी है उनके रेवेन्यूज इम्पैक्ट हो गए हैं। ये जो वीक रेवेन्यू ग्रोथ है सेक्टर का, ये बेसिकली फॉर द सेक्टर हाइलाइट्स हेडविंड्स फॉर द सेक्टर। और ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है कस्टमर्स का अक्रॉस जो उनकी यूजर इंडस्ट्री है वो कट होने की वजह से इम्पैक्ट है। हाउएवर एक थोड़ी सी जो मार्जिनल पॉजिटिव चीज रही है आईटी कंपनीज के लिए कि वहां पर डील विंस रही है, उन्होंने न्यू डील्स जीती है। सो उसके वजह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के कंपनीज थोड़ा मॉडेस्ट ग्रोथ दिखा सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप इन्फोसिस देखें तो वहां पर उनके रेवेन्यू 2.2% डाउन थे क्यू वन क्यू बेसिस पे, टीसीएस के रेवेन्यू मार्जिनली 1.1% अप थे। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ब्रॉडली इन द आईटी स्पेस। पर अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज के लिए दो फैक्टर्स हैं जहां पर अगर ये प्ले आउट होते हैं तो आईटी कंपनीज में थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। उनमें से पहला फैक्टर ये है कि अगर कुछ हम ये जो डिमांड जो रेवेन्यू साइड पर डिमांड सॉफ्ट है, अगर वहां पर थोड़ा वो रिवर्सल दिखता है तो ये कैन बी पॉजिटिव फॉर आईटी सर्विस कंपनी। सो ये चीज है मेरे ख्याल से वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन कि उनके डिमांड कैसे पैन आउट होते हैं इन कमिंग क्वार्टर्स। द अदर थिंग इज कि यूएस फेड या अदर मेजर सेंट्रल बैंक से अगर वो रेट कट करना स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो आई थिंक आईटी stocks may see a little bit of interest going forward. So we have to keep these two factors could possibly improve the interest in IT stocks from the market participants. सेक्टर वैल्यूएशन स्टिल हमें लग रहा है थोड़ा हाई है ये टाइम पर। अगर हम उनकी जो ग्रोथ एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं बिकॉज हमने रीजन आपको बताया है, तो वहां उसको हम कंपेयर करें तो वैल्यूएशन स्लाइटली हमें फिर थोड़ा हाई लग रहा है यहाँ पर। और इसमें स्पेसिफिकली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वहां पर हमें लगता है कि थोड़ा डी रेटिंग हो सकती है। एक रीजन ये है कि बिकॉज उनके वैल्यूएशन थोड़े हाई साइड पर है, और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी हाई है उनमें। अगर वहां डिसअपॉइंटमेंट आता है तो वहां पर स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। उसके अलावा एक और जो कंसर्न है आईटी स्पेस में वो है एआई को लेकर के, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है और उसका जो पॉसिबल नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं रेवेन्यूज के लिए, एक वो देयर अनदर दैट कंसर्न है। सो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। नाउ विद इन आईटी हमें क्या पसंद है, हमें एक इन्फोसिस अच्छा लगता है, लार्ज लार्ज कैप स्पेस में हमें एचसीएल टेक अच्छा लगता है। नेक्स्ट, या ऑयल एंड गैस में अगर आप देखें तो ये जो क्वार्टर रहा फोर्थ क्वार्टर, वहां पे हमने देखा है कि जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट है ऑयल एंड गैस सेक्टर की एज अ होल, वहां पर अराउंड 11% की डिक्लाइन हुई है अर्निंग्स में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस इस क्वार्टर में। और FY25 नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो, स्पेशली बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रॉफिट्स हो सकते हैं थोड़े इंपैक्टेड हो ड्यू टू लाइकली वीक मार्केटिंग मार्जिन्स इन Q1 FY25। अगर हम FY24 की बात करें तो ओएमसीज ने अकेले ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने 29% कंट्रीब्यूट किया था जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स था और निफ्टी का। इनफैक्ट FY25 में दे माइट इम्पैक्ट दैट ऑन द नेगेटिव साइड। सो बाकी अगर हम वी अज्यूम दैट द न्यू गवर्नमेंट अगर कंपनीज को सफिशिएंट फ्रीडम देते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चेंज करने के प्राइस, सो आई थिंक दैट समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर। सो राइट नाउ हम अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल मार्केटिंग मार्जिन्स ऑन ऑटोमोटिव फ्यूल्स इन FY25 एंड और ओएनजीसी की अर्निंग्स, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें ओएनजीसी का कि आगे देखें तो वहां पर उनकी क्रूड प्राइस और गैस प्राइस के अजम्पशंस को लेके अर्निंग्स काफी सेंसिटिव होती है। तो जैसे जैसे आप क्रूड प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो इन कंपनीज की अर्निंग्स को बहुत इंपैक्ट होता है उसकी वजह से।
ओवरऑल विद ये पूरे स्पेस में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद है. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. ओवर टू पंकज. थैंक यू अरुण. सो कैपिटल गुड्स की रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ये रिजल्ट्स एक तरह से मिक्स्ड रहा है, बिकॉज अगर आप लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो पहले ऑर्डर इनफ्लोज काफी स्ट्रांग रहा था, एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग थी. लेकिन ये क्योंकि Q4 वाज ए इलेक्शन क्वार्टर, तो यहाँ पर एक ऑर्डर इनफ्लोज में स्लो डाउन देखा गया है एंड इन टर्म्स एग्जीक्यूशन में भी स्लो डाउन दिखा है. रेवेन्यूज बिन मॉडरेट इन दिस क्वार्टर. लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे अगर देखेंगे तो मार्जिन स्ट्रांग रही है. एक रॉ मटेरियल प्राइस की बेनिफिट मिली है, या फिर ऑपरेटिंग लीवरेज फैक्टर है, या फिर ऑर्डर मिक्स का फैक्टर है. ये सारे फैक्टर्स ने ड्राइव किया है. सो इस पे जो डोमेस्टिक रेवेन्यू अगर आप देखेंगे Q4 में, वहां पर मॉडरेशन देखा गया है. अगर आप एबीबी को छोड़ दें और कुछ डिफेंस कंपनीज लाइक बीईएल एंड कुछ इन शिपयार्ड को छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव रिपोर्टेड this I mean overall moderation in the growth. और मार्जिन्स के बात करेंगे तो इसमें एक ऑपरेटिंग लीवरेज फैक्टर हमने देखा है एंड ये इसमें एबीबी के केस में काफी बड़ा एक फैक्टर रहा है. एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में कम है. एंड इसके अलावा जो बिजनेस मिक्स है, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन भी इस क्वार्टर में हमने देखा जो फेवरेबल रहा है. उसकी वजह से एबीबी सीमेंट्स ने अच्छा मार्जिन दिखा. लेकिन अगर एलएनटी की रिजल्ट्स की बात करें तो वहां पर ओवरऑल मिस हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ कोर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बेटा में, क्योंकि थोड़ा ऐसा कॉम्पिटिटिव एक इंटेंसिटी रही है एंड ऑल दोस ड्यू टू दैट वी हैव सीन देयर इज अ मॉडरेशन इन द मार्जिन इन एलएनटी एंड दे हैव फर्दर गाइडेड आल्सो दैट द मार्जिन्स विल रिमेन मॉडरेट. ऑर्डर इनफ्लोज अभी इलेक्शन क्योंकि ओवर हो गए हैं तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि टुवर्ड्स द कमिंग क्वार्टर्स ऑर्डर इनफ्लोज विल इम्प्रूव. लेकिन यहाँ पर भी Q1 में एक स्लो डाउन तो इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन. बट प्राइवेट कैपेक्स साइड में वी आर सीइंग सम इनिशियल साइंस ऑफ पिकअप, और उसके वजह से ये जो कुछ सेक्टर्स है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे, या फिर सोलर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर एक कैपेक्स साइकिल एक पॉजिटिव है वहाँ. उसकी वजह से ऑर्डर इनफ्लोज फ्रॉम दीज प्राइवेट सेक्टर कैन बी बेटर. दैट्स व्हाट वी लाइक. गवर्नमेंट कैपेक्स की बात करें तो बिकॉज अभी इलेक्शन खत्म हुए एंड बजट आने वाला है, तो ऑफ कोर्स द फोकस विल बी ऑन दैट. बट लास्ट 3 years has been very strong in terms of capex, so keeping that pace, I mean even on that base very high kind government capex looks difficult. So वहां पर थोड़ा सा इसकी वजह से गवर्नमेंट साइड से जो ऑर्डरिंग है वहां पर एक वाई बेसिस पे मे नॉट बी मच. एलएनटी ने हालांकि जैसा गाइडेंस दिया है, दे आर सेइंग 10% ग्रोथ इन ऑर्डर इनफ्लोज इन नेक्स्ट ईयर, व्हिच लुक्स on a higher side as last year they had a very strong base order inflows from the international market, which may not continue in this year. सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट साइड से ऑर्डर इनफ्लोज आएंगे तो उस पर काफी डिपेंडेंसी रहेगी. तो इसके लिए 10% जो ऑर्डर इनफ्लोज गाइडेंस थोड़ा सा वह चैलेंज दिखता है. तो अगर इसमें टॉपिक्स की बात करें तो कल्पत्रु वी लाइक दैट स्टॉक, प्ले ऑन टी एंड अदर इंफ्रा कैपेक्स. यहाँ पर हमारा एड व्यू एंड 1250 का टारगेट है. Cummins we like, we have ad rating and we have a fair value 3800. एंड प्राज इंडस्ट्रीज जो कि एक बायो एनर्जी और जो ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी रहेगा. वहां पर हमारा एड रेटिंग है. ऑफ कोर्स वी हैव सीन सम सेट प्राइस मूवमेंट, बट लॉन्ग टर्म वी आर पॉजिटिव ऑन द स्टॉक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो रियल एस्टेट की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में भी हमने देखा है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेल्स रहा है कंपनीज का. मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इफ यू exclude DLF and Shobha, most of the companies have reported very strong sales growth as well as volume growth numbers. DLF के केस में कोई लॉन्चेस मेजर नहीं हुई है, इसके वजह से इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स नंबर्स अगर देखेंगे वहां पर एक एब्सोल्यूट नंबर्स में डिक्लाइन आया है. शोभा के केस में जो कुछ 2 लॉन्चेस हुए हैं वो मार्च क्वार्टर के एंड में हुआ है, तो उसकी वजह से बड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आया वहां पर. सो दैट हैज आल्सो रिजल्टेड इनटू अ डिक्लाइन इन द प्री सेल्स नंबर इन द Q4.
But the launch pipeline for DLF and Shobha, for both of these companies are quite strong. DLF ने in fact जो guidance दिया है over a last year, they have achieved like 50,000 crore sales. Over that, they are expecting something 17,000 crore sales. तो एक guidance काफी strong है. They are adding new projects in the pipeline. So overall outlook looks positive. अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो लॉन्चेस हैं काफी स्ट्रांग रहेंगी इन मोस्ट ऑफ द मेजर मेट्रोज में. And on the other side, demand continues to remain strong. तो इसके वजह से inventory in the system will continue to remain on the lower side, or that will help in keeping these prices at a benign level. And अगर आप उसमें picks की अगर बात करें तो we continue to like DLF. We have ad rating and we have a fair value of 910 rupees. सिग्नेचर ग्लोबल जो कि गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, वो वहां पर भी काफी अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा ऑफलेट. वहां पर भी हमारा एक पॉजिटिव व्यू है. वी हैव फेयर वैल्यू ऑफ 1375. वी हैव एड रेटिंग. एंड ब्रिगेड व्हिच इज बैंगलोर बेस्ड कंपनी, quite disciplined company and doing very well, and there we have ad rating and target price of 1300 rupees. Over to Shashwat. Thank you, Pankaj sir. So I would be covering the NBFC. So अगर हम देखें तो जो NBFCs हमारे कवरेज में है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस दिया है और फिनेंशियल ईयर 24 का परफॉर्मेंस दिया है, जिनमें उन्होंने हाई ग्रोथ और इम्प्रूव्ड असेट क्वालिटी देखी है. So they have reported the earnings which are ranging from 17% to 72%, which was mainly due to loan growth between 21% to 40%, and in some cases it was due to and in some cases there was an expansion of NIM, that is net interest margin, which was driven by the capital issuance. हम अगर देखें तो NBFC में हमने ओवरऑल 18% का ग्रोथ FY24 में देखा. ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक्सक्लूड करके है, कंपेयर टू 15% ग्रोथ जो हमने 2023 में देखा. हमने देखा कि व्हीकल फिनेंस 26% ग्रो हुआ YOY, और जो डाइवर्सिफाइड NBFC है उनमें भी हमने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा और उन्होंने भी 25% से ग्रो किया. अगर हम नीम की बात करें तो नीम के ट्रेंड भी फोर्थ क्वार्टर में बहुत मिक्स्ड और थोड़े देखने जाए तो थोड़ी कंपनीज के लिए कंप्रेस्ड है. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव इंडिकेटेड, जो RBI का नया सर्कुलर आया तो उस पर हम अगर देखने जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स है जिनको बहुत मिनिमम इम्पैक्ट हुआ, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में है. हमने ये भी देखा है कि फंडिंग कॉस्ट है जो स्लाइटली अफोर्डेबल प्लेयर्स है उनके लिए राइज हुआ है, और जिनका इन्वॉल्वमेंट PSL सेक्टर में कम है उनके लिए थोड़ा राइज हुआ है फंडिंग कॉस्ट. We have also seen that yields had shown slight pressure on affordable housing companies, but has remained stable for other segments. अगर हम asset quality के बात करें तो we have seen that stressed loans had declined quarter on quarter for most of the players. The gross stage to asset either remained stable or decreased for most NBFCs, and gross to assets also went down for most of the players. Companies have guided for moderate growth and normalization after the strong momentum of past 2 years. After viewing the Q4 result, we have revised our estimates for most of the players upwards by 1 to 6%. Given the strong asset quality performance by them, we expect this growth to continue and potentially exceed our estimate. So हम लोग श्रीराम, चोला और हाउसिंग फाइनेंस पे पॉजिटिव है. और अगर हम हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में देखने जाए तो हम लोग आवास और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में देखने जाए तो हम लोग आवास और हाउसिंग फर्स्ट पे, होम फर्स्ट फिनेंस पे पॉजिटिव है. सो ओवर टू वीर. थैंक यू. Q4FY24 was a good quarter for banks. It was a healthy quarter across all the major metrics. Is audible now? Yeah, Veer, yes, you're audible. Okay. Start. Yeah. So
Hello to all. I'll be talking about the performance of banks in Q4 FY24. So, for banks, Q4 FY24 was a good quarter. It was a healthy quarter across all the major metrics. So, firstly, if we talk about the loan growth, so for the banks under our coverage, the loan growth was strong. The loan growth was at around 21%. Now, under this, the state-owned banks grew by 14%, whereas the private sector banks grew by 30% on a year-on-year basis. If you also look at the May month's data of the systemic credit growth, that grew by around 16%, which is a very healthy number. So, what does these two data point indicate towards? It indicates to us that not only was Q4 FY24 a good quarter for the banks for the loan growth, but the upcoming quarter, the Q1 FY25, is also expected to be a good quarter. Further, today itself, the RBI stated that that the forecast for real GDP in FY25 is now to 7.2%. So again, this reinstates the fact that credit demand in economy would continue to remain strong going forward as well. So now if we talk about the margins of the banks in Q4 FY24, so on expected lines, there was some decline in net interest margins. Now in this quarter, the yields on advances for most of the banks remained flat, and there was some upward movement as well. However, on the other side, the cost of deposits, they inched up faster, and therefore we saw some pressure on the net interest margins. If we talk about the management's outlook on con call, most of the banks have stated that the repricing of deposits is more or less done, and therefore incrementally the pressure on NIMs should be limited, and therefore there is comfort on margins going forward. Now, if we talk about the asset quality, अगर हम asset quality की बात करें, तो Q4 FY24 was again a very good quarter for banks. The slippages across all the good banks, they remained at low levels. A lot of the banks, the slippage ratio is now close to the pre-COVID level or even below the pre-COVID level. Also, we saw recoveries being very strong, especially for the PSU banks, and therefore a combination of low slippages and very high recovery. This resulted in the asset quality, the GNPA ratios of the bank remaining at very healthy levels. Going forward also, we don't see any major stress building up in the economy, and therefore our outlook on asset quality also remains healthy, at least in the medium term. Now, interestingly, in this quarter, we also saw that the growth in non-interest income was also very good, which was aided by the treasury income. The card spend was also very good, and which also helped the non-interest income. Further, there was also a lot of recoveries from the write-off accounts which took place. Also helped in the good growth in the non-interest income. And therefore, because of all these stated factors, we have seen that the profitability of banks came out really good. We continue to remain positive on the entire banking sector. We believe the economy is in good shape. Fundamentals of all the banks are strong in current levels. And valuation-wise also, a lot of good banks are not very stretched. This is why we have a positive stance on the banking sector. We continue to remain positive on the top private sector banks, HDFC, ICICI Bank. These banks remains some of our top picks. In the mid-sized banks, we also like Federal Bank. So this was about the banking sector in Q4 FY24. On to Rini Mehta now. Thank you. Thank you, Veer. So that was our webinar on fourth quarter review. Now we will open the floor for question and answer session. So please use this opportunity and drop your questions in the chat box. Starting with the questions we already have. Ajay Chodia is asking for views on IRB infra. Pankaj, can you take this question, please? Yeah, sure. So Ajay ji, IRB हमने पहले भी discuss किया है. So this stock on this stock we are very much positive. Why? Because of course road sector में अगर जो capex की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफी फंडिंग की.
और वहां पर उसकी वजह से बहुत सारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और हैम प्रोजेक्ट्स आए। लेकिन अभी जो एनएचआई की जो बैलेंस शीट देखेंगे वो स्ट्रेस्ड है एंड वहां पर डेट काफी ज्यादा है। एंड नाउ इन द करेंट सिनेरियो वी आर सीइंग लॉट ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एंड आईआरबी इज द मेजर प्लेयर इन दिस बीओटी सेगमेंट, और इनका एक काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दे सक्सेसफुली कंप्लीटेड लॉट ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट्स। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इन प्रोजेक्ट्स को इन्वेट में भी ट्रांसफर किया। इन दैट वे दे हैव डी-लीवरेज देयर बैलेंस शीट आल्सो, so they have now the enough room to grow their BOT assets in future। और फ्यूचर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो बात करेंगे, अगर जैसा आईबी ने कॉल्स में भी बोला है, करीबन 44,000 करोड़ के बिट्स पाइपलाइन है। सो नाउ द इलेक्शंस आर ओवर, सो मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल कम फॉर बिडिंग। तो आईबी वुड बी अ की बेनिफिशियरी। इसके अलावा कल अगर हम देखेंगे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया जहां पर 30% टोल रेवेन्यू का इंक्रीज उन्होंने रिपोर्ट किया है इन द मंथ ऑफ मे। तो ये नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आए हैं, इसकी वजह से स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है। टुडे इट हैज मूव्ड अप शार्पली। हमारा इस पे एड व्यू है विच इज बाय ऑन डिक्लाइन। इस पे हमारा टारगेट प्राइस 70 रुपीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इस पे व्यू है काफी पॉजिटिव व्यू है ऑन आईआरबी स्पेसिफिकली। Pankaj sir, I know you mentioned Cummins is your preferred pick in the presentation already, but could you give some more color on Cummins? One of our participants, Harsh Kaushik, wants to know views on Cummins. तो हर्ष, ऐसा है कि कमिंस का जो बिजनेस है, दे आर इनटू इंजन्स सेगमेंट एंड इट्स अ एमएनसी कंपनी विच इज हैविंग ऑल द टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। जो प्रोडक्ट्स है उसकी बात करें, सो कमिंस इज अ मेजर प्लेयर। और इंडिया में अभी आप देखेंगे काफी रियल एस्टेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। So, despite we are seeing lot of investment in the power sector, लेकिन एक बैकअप जो होता है power, so that demand will is expected to continue। और रिसेंट नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं। दे हैव रिपोर्टेड डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ 20% प्लस इन द लास्ट क्वार्टर, प्लस 7 roughly 55% ग्रोथ इन पैट। नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं एंड डोमेस्टिक साइड से पर्टिकुलरली काफी अच्छा है ग्रोथ दिखा है। एंड अगर लास्ट 5 साल की बात करें, वहां पर भी डबल डिजिट उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, द डोमेस्टिक बिजनेस मोर देन 14%। सो आउटलुक भी कंपनी जो गाइड कर रही है, दे आर एक्सपेक्टिंग 2 times ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो 13-14%, 12-16% काइंड ऑफ ग्रोथ इज मोस्ट लाइकली दैट वी आर सीइंग इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। सो कमिंस हमारा कैपिटल गुड्स में टॉपिक है एंड इस पे हमारा जो एड रेटिंग है एंड फेयर वैल्यू 3800। Thank you. Arun sir, one of the participants wants to know your views on Ultratech Cement. या सीमेंट में आप देखेंगे अल्ट्राटेक इज द मार्केट लीडर। सो आप उनका अगर Q4 नंबर्स भी देखेंगे तो Q4 में दे एक्चुअली पोस्टेड वेरी गुड रिजल्ट्स और काफी अच्छे रहे थे। उनके कॉस्ट कम थे ये क्वार्टर में, अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी रोबस्ट रही थी। और अगर आप आगे के लिए देखेंगे तो वहां पर भी कंपनी ने बात की है कि कॉस्ट रिडक्शन दे सी फर्दर कॉस्ट रिडक्शन ऑफ से 200-300 रुपीज पर टन बेसिस पे आप देंगे तो नेक्स्ट 2-3 years में दे आर आस्किंग अबाउट further cost or talking about further reduction in cost for them। ओवरऑल अगर आप अल्ट्राटेक में देखेंगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक कि ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा कंटिन्यू रहेगा। आप वॉल्यूम वाइज देखें या उनका एबिटा साइड देखें या अर्निंग्स देखें वहां पर, तो वो सब कंसर्न नहीं है। एक ही कंसर्न जहां हमें थोड़ा सा अल्ट्राटेक में दिखता है, इट्स नॉट मोर फाइनेंशियल बट ड्यू टू वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस हमें लगता है थोड़ा स्टॉक में महंगा है, इसकी वजह से हमारा स्टॉक के ऊपर सेल रेटिंग है। पर अगर आप ओवरऑल सीमेंट पैक देखें तो उसमें हमने ऑलरेडी 2 स्टॉक्स डिस्कस किया, 2 स्टॉक कहा था जहाँ हमारी एड रेटिंग है, वो एक डालमिया भारत है और दूसरा नोको विस्टास है। और इसका एक रीजन ये है बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा हमें वहाँ ठीक लगता है। और बट डालमिया भारत में एक जस्ट थोड़ा एक आपको साथ में एक अपडेट भी दे देता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी जिसमें कि ये कहा गया था कि जेपीए हैज एडमिटेड द एनसीएलटी बेसिकली हैज एडमिटेड जेपीए फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। सो जस्ट टू रिकॉल कि डालमिया भारत ने जेपीए के साथ एक बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे वो उनकी सीमेंट कैपेसिटीज खरीद रहे थे सेंट्रल इंडिया में। तो अगर ये एनसीएलटी एडमिशन अगर होता है समझो तो, और इसके वजह से अगर ये जो डील है इस पे कुछ इम्पैक्ट आता है या समझो अगर कैंसिल हो जाती है बाई चांस फॉर सम रीजंस, तो ये थोड़ा एक सेटबैक हो सकता है।
बिकॉज ये एक थोड़ा फ्रॉम अ लोकेशन पॉइंट एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, एंड कंपनी को एक पैन इंडिया प्लेयर बनना है डालमिया भारत को, तो ये दैट में इम्पैक्ट। और ये डील इन केस इफ डजंट गो थ्रू बिकॉज ऑफ जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से, अगर ये डील नहीं होती है बाई चांस, तो इससे हमारे एस्टिमेट्स भी थोड़े बहुत डालमिया भारत में कट हो सकते हैं। सो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट टू दी कॉन्वर्जेशन एज वेल। सो ओवरऑल अल्ट्राटेक पे हमें थोड़ा वैल्यूएशन हाई लगता है, बट आप उसके अलावा डालमिया भारत देख सकते हैं, और उसके अलावा न्यूवो विस्टास देखते हैं मिड और स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज में। Thank you. Next question is from Kiran Ghatke. He is asking, HDFC Life Insurance is recommended with the target of 800, but that is not showing strength. What is your view, and when will you give your call for exit? Maybe Veer and Shrikant sir can answer this question. Over to you, Veer. Sure. Thank you for the question. So firstly, our stance on HDFC Life remains positive. We have a buy rating on HDFC Life and with a fair value of 775. Now, yes, the stock of HDFC Life has been under some pressure. We need to understand that the entire life insurance industry has faced multiple headwinds in the last year or so, be it the change in tax rates in the higher ticket policy rates, or the new policies on surrender values. So these has been some of the reasons why the industry has been under pressure. So we do agree that the medium-term outlook on the company remains moderate. But the valuation at which we are getting HDFC Life, we feel is enticing. Also, the management has indicated that they expect to grow higher than the industry. And looking at the track record of the company, we agree that the management would be able to do so. And therefore, because of these reasons, we continue to remain positive on HDFC Life, and we believe in the strategy which they are currently doing, that is focusing on lower ticket size business, which is the way to go for the entire life insurance industry. And they have been doing it good, at least if we look at their Q4 numbers. Shrikant sir, would you like to add something? Yeah, I think it is all these insurance companies, they are facing problems mainly due to concerns on bank insurance practices expressed by the government. सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोलूंगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे जो बैंक्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का एक कुछ ओपिनियन है। और अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर वो क्या ओपिनियन लेते हैं या क्या स्टांस लेते हैं, उसके ऊपर आगे का पूरा जो बिजनेस होगा वो डिसाइड होगा। तो ऐसा नहीं कि लाइक कंप्लीटली जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो उसी के ऊपर चल रहा है, बट ये समथिंग ऐसा कुछ कंसर्न है कि जो अगर इस कंसर्न के ऊपर अगर क्लैरिटी अगर आ जाती है तो देन देयर विल बी मोर एग्रेसिव स्टांस फ्रॉम ऑल द बैंक्स। सो करंटली मुझे लगता है कि इट इज only because of this type of reason all these insurance companies are under pressure. But otherwise, if we see the overall strength and the way there is like the visibility of the business for next several years, I think if there is a long-term view, then just sit on it tightly. I think it will be an opportunity for investors to invest more, because most of the time, whenever the stock has fallen to this 550, 560 levels, it turned more and more attractive for investors. So it trades between the range of 550, 560 and 700, 750 on the high side. I think if there is a long-term view, then add more at these levels. If you don't have that much funds to add more, then just sit on it tightly. Eventually, I think the stock is going to move towards its fair value. Yes, you may see some changes or maybe some like downward revision of the fair value, and that time we will inform you accordingly. But right now, for the time being, just stay invested. Thank you, sir. Sir, there is one more question for you. Kesrimal Oswal has commented, Shrikant sir, I remember Kolhapur webinar. Please tell me about gold and silver and rupee dollar rate. See, for gold and silver,
I cannot give short-term view, but if there is a medium to long-term view, I mean to say if there is a view of next at least 12 to 18 months, then my view is that just sit on it tightly because all these commodities, especially precious commodities, are going to do well. उसके पीछे का रीजन यही है कि आने वाले कुछ महीनों में या शायद 6 से 12 महीने में अगर आप देखें तो हमें लगता है कि जो डॉलर है वो थोड़ा और वीक हो सकता है और जो करंटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं या तो ओवरऑल जैसे कि यूएस का डेफिसिट बढ़ते जा रहा है और लिक्विडिटी का जो फोर्स है अभी राइट नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट्स डेवलप से लेकर इमर्जिंग मार्केट्स तक हमें लगता है कि ये सभी कमोडिटीज में एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बना रहेगा एंड नाउ लाइक people have started looking at it as an investment option. Okay, मल्टी कमोडिटी करके एक पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ है यानी कि अभी ऐसा हो रहा है कि because in last 2 years if you see the returns from gold and silver, see silver is doing well in this year, but if you see the overall the trend of last 2 years of gold, then gold delivered returns to even investors. So I am of the view that now it is one of the investment asset class and I think the demand is going to continue. अभी तक तो जो देख रहा है अपने को वो सब एक रैली दिख रही है बट मे बी आफ्टर 12 मंथ्स मुझे लगता है कि शायद इसमें एक यूफोरिक ट्रेंड भी आ सकता है तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको जो करनी है वो आप एक लिमिट तक इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल करें इसमें बट एक लंबे अवधि का नजरिया रखें देन आई थिंक वी कैन सी अ वेरी डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस टू कमोडिटीज. That's all. Thank you, sir. Now I'll take one last question from one of our regular participants. So Renu Jain is asking for views on Titan. Pankaj sir, can you contribute please? Yeah, sure. So Titan जो स्टॉक है इस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है. इनफैक्ट आप अगर हम रिसेंट हमारा एक रिकमेंडेशन देंगे अंडर अपॉर्चुन भी हमने इसको रिकमेंड किया है. स्टॉक प्रेशर में रहा था पास्ट quarter, but we believe that there is enough value in this stock. In fact, अगर आप ये बिजनेस को देखेंगे, टाइटन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द ब्रांडेड ज्वेलरी स्पेस और यहाँ पर जो कंपनी का ग्रोथ टारगेट है काफी अग्रेसिव है. दे आर टारगेटिंग सम 15 to 20% CAGR इन द रेवेन्यू साइड. वो फॉर टू ग्रैब द मार्केट शेयर दे आर इवन looking at the pricing discounts and all those things. So in that way, even they are compromising something on the margin side. So this is what they're guiding is roughly 11.5 to 12.5 kind of margin. So यहाँ पर जो है मार्केट शेयर का बहुत बड़ा गेम है एंड ये ब्रांडेड बिजनेस है और इवन वॉचेज एंड आईवियर में भी काफी अच्छा ग्रोथ. दे आर एक्सपेक्टिंग सम 20% kind of growth, 18-20% kind of growth. So across segment they are targeting very high growth. So yeah, aggressive approach will give you a very strong growth in the earnings also in next 3-4 years. So we are targeting some 19% earnings growth. So इस पे हमारा एड रेटिंग है. इस पे हमारा जो टारगेट प्राइस है 3600 रुपए का 3600. With this, we have reached the end of the webinar. Shrikant sir, would you like to give closing comments? Yeah, sure. See, like we saw again a strong rebound from the lower levels, and now everyone is like it's confused at what is exactly going to happen. Because if we just consider the fundamental aspect of the market, then it is at current levels it is expensive in terms of if we consider FY25 earnings. But if we consider the earnings of FY26, 1 year forward earnings, then in that case, we are at 18.5 times. And I have seen that whenever the market moves towards the band of 20 times, I'm to say in terms of price earnings, whenever the market reaches to 20 times to the 1 year forward earning, that time it becomes more and more expensive and the correction comes.
profit taking happens very aggressively. Till now, we are at 18.5. And after this particular specific event and outcome, which is positive, I am of the view that we may see the levels of 20 times, I'm to say, which is around 25,000 in next few months. It will take time. I'm not saying that in next 1 or 2 months, but in next 6 to 8 months of time, the market may even hit the levels of 25,000 because the liquidity flow is intact. And because of this stable government, again, we could see participation from institutions, as well as if we see the US markets or US bond yield starts declining from these levels. And if they start talking about a rate cut, or if the monsoon turns better than expectations, then in that case, we could see the levels of 25,000. But there we need to be very, very careful. But at these levels, we could see some sideways sort of activity because we are at the base case level. So 18 times is the base case level, and we are somewhere close to those levels. So the possibility is that we may spend some more time around these levels, but eventually we are of the view that in case if there is any correction, the buying will emerge. And broadly, if there is a medium to long-term view, then we should be more and more stock picker in this market. So टेक्निकली भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट ने 21,800 21,700 का एक बेस बना लिया है. 23,000 के करीब मार्केट में एक बड़ा रेजिस्टेंस है. 23,350 आई थिंक प्रीवियस हाई था, करेक्ट. तो 23,350 के ऊपर हम एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग की रैली देख सकते हैं, और उस केस में हम 23,600 या 700 के लेवल्स भी देख सकते हैं. आइडियल स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें कुछ एक्सपोजर को थोड़ा यहां से, अगर मार्केट में मोमेंटम मिलता है, अगर एक्टिविटी मिलती है, अपवर्ड एक्टिविटी मिलती है, तो हमें एक्सपोजर को कम करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा. कई सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि मॉनसून के ऊपर एक ओवरऑल प्रेडिक्शन आएगा, फिर बजट है, उसके बाद यूएस इलेक्शंस है. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. तो हमें लगता है कि ये मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा. अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर यूएस से कुछ ना कुछ न्यूज बनती रहेगी, तो हमें यही लग रहा है कि इस मार्केट में हमें और भी वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी, और भी वॉलेटिलिटी आएगी, और इसी वजह से हमें लगता है कि हमारे एक्सपोजर को थोड़ा कम करना है. और मार्केट में जब करेक्शन आता है, तो जो स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं एवरी मंथ या एवरी वेबिनार में, हमें लगता है कि उन स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है. तो करंटली आज जैसे हमने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, या बैंक्स है, या डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स है, फार्मा कंपनीज है, वहां पे फोकस करना है. तो आपको इसी ट्रेंड के साथ रहना है. कीप इन्वेस्टिंग. एक बेसिक जो भी यहाँ पे हम वेबिनार में बात करते हैं, हम अगर आप उन लेवल्स को लिख के रखते हो, या तो अगर आप उस अर्निंग्स के बेसिस पे अगर मार्केट में काम करते हो, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले जो 6-8 महीने हैं, वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे. तो कीप इन्वेस्टिंग, बट बाय इफ देयर इज एनी करेक्शन इन द मार्केट. दैट्स इट. Thank you, sir. Hope all the participants liked our webinar. Keep sharing your feedback. And just a quick reminder before we wrap, do follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already. Thank you. Have a good day ahead. Thank you.